फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट. Hello and a very warm welcome to all our viewers. You're watching the Cricket Next YouTube channel, India versus England, 4th Test, Day 3T, and I guess the match is slightly inclined towards England's favor. England, although they are 5 wickets down, and in the first innings we saw they were 112 for 5. Now they are 120 for 5. Hopefully for the Indian fans and for the Indian team, they won't repeat what they did in the first innings, going to a massive score from 112 for 5. This time around, India will be hoping to restrict them to a very low total. They are already 166 runs ahead in the match, and 40-50 more odd runs, and India will really start to panic. Well, to talk more about this match and what's in store in the future for us, I have with me Jamie Alter and Soumya Kapoor. Hi Jamie, hi Soumya. Jamie, should we worry? Is this just time? Is it the time we start worrying, or have we been थोड़े बहुत runs? नहीं, I think worrying तो day one से तो हो ही रहा है. Look, 166, 5 wickets left. मुश्किल है because look, Johnny Bairstow is looking good. Folks को हम जानते हैं. Hartley तो 18-20 तो यहाँ भी मार देगा. So you need to get these guys as quick as possible. कितने रन निकालने हैं आपको? 40 रन? Very, 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 very possible. But it's definitely, like you said, Karan, it's advantage England. और अगर यार चलो मान लो 200 का टारगेट दे भी दिया, can India chase it? I'm not so optimistic. So I really hope they get the last 5 wickets for under the 40 odd runs. But वो 200 भी बहुत 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 मुश्किल होने वाले हैं. बॉल अब कुछ कर रही है. Absolutely. Soumya, your thoughts on the England innings so far? जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेला, Zach Crawley was looking really good to a certain phase. हालांकि 60 runs मारे 91 balls पे, but Duckett, Ollie Pope again first ball dismissal. Ashwin was on a hat trick. Jamie की prediction थोड़ी सच होती दिख रही थी, 7 wickets early. But your thoughts on the England batting lineup so far? मेरी 4 विकेट वाली प्रेडिक्शन ज्यादा क्लोज है. Well, as you remember, I talked about this. Small contributions from the England batters, वो enough होगा during the lunch session when we were talking. और Zach Crawley, देखिए, अगर ऑली पॉप 0 पे आउट होगा तो जैक क्रॉली ने वो जो है ना वो उसको कवर अप कर दिया with that 60. Duckett 15, Root 11, that makes it around 30 again. ठीक है, Bairstow is batting at 30. फोक्स ने यहाँ से 20-30 कर दिए, टॉम हार्टले रॉबिन्सन ने मिलके 50 कर दिए. It's going to be game set match for India. So I was talking about the small contributions only. 120 पे 5, अगर आप एज एक स्कोर कार्ड की तरह देखोगे, yes, it looks really good as far as the Indian bowling is concerned, but it's very, very worrying because they have a lead of 166. Anything over 200 is going to be very, very difficult for India. क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी आ जाता है यार कि 200 के ऊपर चेस करना है. यहाँ से अगर आप 30 रन में 5 विकेट उड़ा देते हो तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बॉस एक मोमेंटम, जो आपने बात करी थी पहले कि एक मोमेंटम शिफ्ट कहीं ना कहीं हो जाएगा. बट यस, इंडिया आर इन अ फेयर स्पॉट ऑफ बॉदर, आई वुड से. और कहीं ना कहीं ये जो 60 रन जैक क्रॉली ने लगाए हैं ना, ये थोड़े से हमको कॉस्ट करने वाला है. आई जस्ट होप इट डजंट, बट या वी आर इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर. Absolutely. And Jamie, एक डिसमिसल है जो सोशल मीडिया पे अगेन इट इज डूइंग राउंड, एक्सपर्ट्स आर टॉकिंग, दैट इज द जो रूट LBW. योर थॉट्स ऑन दैट? एंड इट इज डूइंग सोशल मीडिया पे हर जगह. इवन इन फैक्ट मेनी इंडियन फैंस आर सेइंग दैट रूट वाज अनलकी इन दिस बिकॉज दिस वाज स्पेशली पिचिंग outside the line. What's your thought on this? No, it does look that way, but in the first innings he got a call which went in his favor. So like I said, if we're going to scrutinize and look at social media for every single thing, right? कल 2 बंदे ने मेरे ट्विटर टाइमलाइन में कुमार धर्मसेना ऑफिशियल को टैग करके बोला कि ये आदमी इंडिया के खिलाफ है, आज वो इंडिया के फेवर में दे रहा है. So this is like the wind, yeah. It'll go there. Yes, I mean, from what I saw, it looked a bit
unfortunate, but in the first innings when he was overturned, I thought that was out. I didn't see much of a spike. So it got him 100 in the first innings. It didn't go here. I think fans on both sides have enough reasons to be positive and negative. And they go, like we discussed before, yeah, ये तो कब से चल रहा है. These people who only watch cricket post IPL, 80s में देखो क्रिकेट यार, 90s में देखो बहुत अलग लेवल के अंपायर्स थे. I'm saying not so good umpires. Yes, they were Dickie Bird and there was David Shepard. ये larger than life थे. Steve Buckner तो सब याद तो करते होंगे ना. So it's Kumar Dharmasena has by far in this series been the best umpire, right? Rod Tucker has had a shocker of a match. But these guys don't have shockers every single time. And like I said in many past shows also, technology अब तक जो इस खेल को चलाते हैं, look what happened in the PSL परसों. Hawkeye had to apologize to the PSL, right? So this just shows कि यार don't judge, don't spoil your day, don't cry, don't throw a party based on what you're seeing on this. इतिहास, it's like history is littered with these examples. यार आज ये होगा, कल रूट के बदले रोहित शर्मा होगा, नॉट आउट रहेंगे, हमारे फैंस बोलेंगे वाह वाह. So I'm not being dismissive of this, but if you start to take social media and every single fan seriously, फिर तो यार you yourself will feel much older than you are, Kana. Yeah, absolutely. वही सवाल जेबी वापस उठ के आ रहे हैं. Why Kuldeep introduced so late? हाय क्या बोले यार. I don't know. I really, there are some things where you'll find an answer from me. मैं सही गलत हूँ वो तो that's the second stage of the argument. But why Kuldeep? I really don't understand what this graphic does show is something that I've been saying on this channel now for a long time. इंडिया के अंदर इक्का तुक्का रेयर केस को छोड़ के दूसरा पेसर की जरूरत है ही नहीं. ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में हमने देखा था. बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के 4 टेस्ट मैच में दूसरा पेसर ने ओवर फेंके ही नहीं, और अगर फेंके थे दूसरे इनिंग्स में, यानी कि इनिंग्स 3, it was 1 over, 2 overs. He's not even looked at Akashdeep. This is why I keep saying you don't need 2 pacers when you're playing in India, irrespective of the pitch. Yes, day 3, Rajkot, Mohammad Shami put in a spell, but that's one spell in about, I think there was one spell by Umesh. You're talking about 2 spells in 3 years where the second pacer has actually been given the ball and then being done something. So I'm saying let's look at that and let's say भाई आपको एक पेसर की जरूरत ही है, दूसरा आपको जरूरत नहीं है भाई. But Jamie, यहाँ again I'll go back to that जसप्रीत बुमराह discussion. पहले इनिंग में सिराज ने 18 ओवर डाले और आकाशदीप ने 19. यहाँ सिराज ने 3 ओवर डाले. Let's suppose ये 7 ओवर और डालते हैं तो कुल मिला के 25 ओवर एक मैच में. करेक्ट. जसप्रीत बुमराह को 25 ओवर भी वो मैच में नहीं डाल सकते, उन्हें रेस्ट चाहिए था. एब्सोल्युटली, बिल्कुल, आई एग्री विद यू. शॉकिंग. फेल टू अंडरस्टैंड दिस यार. और अगर आकाशदीप, I've got no words, man. And again, we discussed this in Hyderabad, we discussed this in Visakhapatnam. We didn't need to discuss it so much in Rajkot because of what Jaiswal and Sarfaraz did, but we discussed it in this. Look at what I'm saying. Look at this graphic. If anybody still has any doubt, you don't need a second pacer when this visiting team bats the second time. What is consistently screwing up? It's your batting. Play another batsman, right? वैसे ही आपके जो top 6 हैं, 2 तो any given day 2 of them are not going to score runs. You may as well play Akshar now. You may as well play Washington Sundar. They're very good batsmen who can bowl you handy overs. अब counter है कि भाई यहाँ तो कुलदीप को 5 मिल रहे हैं, कोई बात नहीं. Play Akshar as a batsman. Play Washington as a batsman. What is consistently letting you down? Batting. Yeah. But I agree to. I'll just add one thing to that. I agree to you, Jamie, क्योंकि अगर जाडेजा को हमें 5 नंबर उतारना पड़ रहा है तो let's suppose if Washi is there, you can have him at number 5, जैसे इस 2 innings में हुआ है. So yeah, I mean that makes sense. You have a batsman who can bowl probably 20-25 overs in the innings, a spinner, an extra spinner if you need him, and he can bat and he is very good. उन्होंने यार ऑस्ट्रेलिया में जो करा, जो थोड़े बहुत मैचेस उन्होंने खेले उसमें जो करके दिखाया, I mean
Yeah, completely agree And with again, your third spinner, जो भी नाम हो, आज कुलदीप है, तो 2 मैच पहले अक्षर था, आपका थर्ड स्पिनर वैसे ही ज्यादा ओवर नहीं डालेगा, right? True. That's fine. You don't, if you're picking these 3 spinners plus Akshar plus Sundar, you don't need to even bowl those 2, right? Because Yeah. these 3 are good enough. What is every match? What's been the feature? Barring one test match, Rajkot, batting, yeah. वहां भी batting was not good, but India won by 434 runs, so I'll excuse them, right? BGT ले लो, South Africa ले लो, it's the batting which is not getting you. Why are we worried that this team can't chase 190? Not the bowling, it's the batting. So It's a batting. एक दिन गिल है, एक दिन पाटीदार है, कल कोई और होगा. Batting over a long period of time has been your biggest disappointment. ऊपर से जो भी आपका सेकंड पेसर है, वो ज्यादातर ओवर नहीं फेंकता है विजिटिंग टीम के दूसरे इनिंग्स में, चाहे वो मैच का तीसरा हो या मैच का चौथा हो. वी ऑल नो, अरे कप्तान तो स्पिनर को ही देगा, और ये हो रहा है. व्हाई डू यू नीड अ सेकंड पेसर? आई डोंट अंडरस्टैंड. Absolutely, and even Soumya, the fact that okay, आपने एक पेसर को इस इनिंग में बॉल करनी थी, should he have gone with Akashdeep over Mohammad Siraj, considering that Akashdeep is in more rhythm, is in more form, और वो ज्यादा लीडर लगे हैं, especially against the likes of the openers, Ollie Pope, उनके against पहली इनिंग्स में. This thought crossed my mind because मेरे को लगा है कि सिराज कहीं ना कहीं, as I've been saying, इस सीरीज में ऑफ लग रहे हैं थोड़ा सा. he is not in that kind of a rhythm. He is leaking runs. आप आज की इकोनॉमी देखो तो 5.3. तो फर्स्ट इनिंग्स में he started with an economy of over 6 or 7 if I'm not mistaken. वो बाद में जाके थोड़ा सा कर्ब हुआ था. So yeah, I mean he could have gone in with the Akash. I don't understand why do you have to go in with an Akashdeep or a Siraj. यार तीनों को टैंडम में डलवाओ ना बॉल, क्या प्रॉब्लम है? एक दो ओवर इधर उधर समझ आता है मुझे कि एक आपको एक एंड को पकड़ के रखना है, इसलिए आपको ओवर डलवाने हैं. तो 3 ही ओवर डालने थे सिराज से. तो आई मीन इफ आई कैन जस्ट से दिस कि जयसवाल से डलवा लेते 2 ओवर, अगर यही करना था तो. आपने डे एंड में भी तो यही करा था. या आई कैन रैप माय हेड अराउंड दिस लॉजिक कि फर्स्ट तो बुमराह को बैठाना क्यों है, सेकंड आप सिराज जब आपको दिख रहे हैं वो रन खा रहे हैं तो आपको, क्योंकि द प्रॉब्लम इज, ठीक है आप रन्स दे रहे हो, दैट इज ओके, हो जाता है कभी कभी, रिदम नहीं आता, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे अगर एक ओवर में 3 चौके लग गए ना तो मोमेंटम चला जाएगा. आप 12 रन फालतू के खा जाओगे और वो 12 ना कब 50 बन जाएंगे पता नहीं चलेगा, एंड दैट विल कॉस्ट यू द गेम. यहाँ पे ये कंसिडर करके चलना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट और कैप्टन को कि बॉस यू कांट लेट द मोमेंटम शिफ्ट. अभी भी मोमेंटम आपके पास है, इट्स जस्ट दैट वो जो लीड है 166 की वो बड़ी लग रही है बिकॉज द पिच इज डूइंग समथिंग. बॉल में थोड़ा सा टर्न है, लेकिन यार ऐसा नहीं है कि हार्टले और बशीर और जो रूट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो इतने बड़े प्लेयर्स हो गए कि आपको 200 रन भी चेज नहीं करने देंगे. ऐसा नहीं है यार. रोहित शर्मा को 16-17 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए. शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया में जाके रन बनाए, यशस्वी जायसवाल ने इस सीरीज में 200 करिए, सरफराज हैड अ ब्रिलियंट रन अपने डेब्यू पे, ध्रुव जुरेल हैज प्रूवन हिज मेटल. सो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते. द प्रॉब्लम इज आप मोमेंटम शिफ्ट होने दे रहे हो, आप बैकफुट पे अपने को लेकर आते हो. इट्स ओके, व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट इनिंग्स हैपेंड, सिंपल, खत्म करो, वो हो गया. द गेम, द फोकस शुड बी 50 रन्स 5 विकेट्स, दैट्स इट. 50 से ऊपर नहीं देना है इसके बाद. Absolutely. That's it. Jimmy, what's this love story between Ben Stokes and low bounces? He often gets these balls that I felt so bad, yaar. I felt so bad. Do you think it is his luck or is he really out of form with the bat? Well, जो I think first innings of this series बंदे ने 70 मारे थे. That looked like a very good knock. पर उसके बाद runs नहीं आए. Some bad luck, some just bad judgment. I mean, look, मैं कौन हूँ इसको बोलने वाला कि क्या करना है, लेकिन मुझे पता है कि ऐसे पिच पे बैकफुट पे तो जाते ही नहीं है, राइट? जाते ही नहीं है. और अगर जाते हो तो बेन स्टोक्स की तरफ मत जाओ. That back foot is really going across and then he's pushing. So, but again, I mean, I think it's just more bad luck. But personally, I don't think he'll care if his team, like I predict them to, wrap up this series. हमने जिसको कहा कि वो खराब फॉर्म में, वो आ गया. अश्विन भी फॉर्म में आ गया है. Johnny Bairstow, again, I think Johnny Bairstow will probably get out between 30 and 40. He's gotten to 38, I think, twice in this series, and then he swept something. तो डेंजर है कि जब जॉनी बेयरस्टो 40 पार करेंगे ना, फिर सीधा 100 तक जाएगा वो. So, but yeah, like whoever we've discussed,
has now the form has come back. So let's not talk about Ben Stokes. मालूम पड़ा साला bowling नहीं करे धर्मशाला में आके. नहीं, you're right. बैकफुट थोड़ा सा इशू है. जो जसप्रीत बुमराह ने भी उनको जो बोल्ड मारा था, दैट वो थोड़ा मूवमेंट का प्रॉब्लम था. वो मूवमेंट का प्रॉब्लम 2 बार. Yeah. He's not able to judge the low bounce. That's what my examination is. कि वो जब बॉल थोड़ा नीचे रह रहा है ना, तो वो नहीं वो सब. And correct. I understand that. वो थोड़ा जो क्या कहते हैं स्टांस है उनका, वो थोड़ा इस तरीके का है, like up height. Yeah. The match is about to start and we have 2 final questions. पहला क्वेश्चन तो सीधा जेमी सर को है. जेमी सर, thoughts on Rohit's captaincy in this session? The good thing is that he listened to us. I know he didn't, but whatever we discussed in the previous show, it went out there. He started with spinners. Bairstow is gone. Fantastic. There you go. I called it. Again, I mean, look, when the team it was better than the past few sessions, but it still lacked. I thought a lot of easy singles were given, but जब 6 wicket गिर गए हैं, I'm not going to be harsh on him. Yeah, India's done very well to get 6 wickets. Very, very well. Had he began with the 2 pacers, they would have, like I said, 8 में 55, फिर spinner ही आके लेते. अच्छी बात ये है कि he opened with spinners. Yes. Yeah, Bairstow handing an easy catch to the covers and helping India towards a good total. या तो 30 और 40 के बीच, या फिर फाइनल क्वेश्चन. व्हाट्स अ गुड स्कोर टू ट्राई एंड रिस्ट्रिक्ट? दोनों से एक फाइनल स्कोर लेंगे यहाँ से आपको क्या लगता है, विद स्पेशली Bairstow gone now, कि दिस शुड बी द टोटल, कि इसके अराउंड ही होना चाहिए. 40 रन से ऊपर नहीं बनना चाहिए. दैट्स इट. 4 runs, 4 wickets, target 171. अभी 0 पे 4 ही कर दे. 120 पे निपटा देते हैं ना, फिर ऐड ही नहीं करते. कर दो. 200 is, I mean, okay, it's only 40 runs, but it's a psychological hold. साउथ अफ्रीका में कहाँ पे हुआ था ना इंडिया के साथ, they were bundled out in क्या 8 रन पे 5 विकेट. नहीं, अभी recent one. नहीं, कोई collapse हुआ है ना? अभी हुआ था, but उससे पहले 2018 the first and second test matches, the target was, I think, 205 and 220 odd, if I'm not mistaken. Both times नहीं हो पाया. So that always sticks out, you know. Yeah. So probably 4 more wickets, and as Jamie said, 4 runs, 4 wickets. अगर हो जाए तो the way we 170 is chaseable. 170 is chaseable. 200 plus is not. 200 plus is not. So this becomes a mental game now. Anything above 200 will be a very, very tough challenge for. अगर 200 के ऊपर टारगेट है, और 200 अगर वो इंडिया को चेस करना है, सिंपल फंडा, रोहित शर्मा जिस तरीके से अपनी T20 की पारी खेलते हैं वैसे खेले, 5 ओवर में 50 लगाए, मोमेंटम अपनी तरफ ले, बैकफुट पे पुश करे इंग्लैंड बॉलर्स को, कोई भी स्पिनर हो. Try it. Yep. Yeah, they'll have to take this approach, the baseball approach, so to say. With the bat. Well, thank you so much, Jamie. Thank you so much, Soumya. And thank you so much to all our viewers. Again, we'll connect with you after the stumps, and again, hopefully with the good news, because so far it's slightly inclined towards the English team. But then we'll have to wait and see where does this session go. Thank you so much. Enjoy the match and have a nice day. Thank you. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.